क्या मामला है? अनमोल बिश्नोई का जो भाई है उसको डिपोर्ट करके लेके आया जा रहा है, क्या पूरा? देखिए, अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है और इसके पहले भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यूएसए में डीएचएस डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से डिटेन हुआ है आयोवा में। तो हमें विक्टिम फैमिली की तरफ अपडेट्स मिलता है तो हमें पता चला है कि आज 18 नवंबर 2025 को अनमोल बिश्नोई को बाहर निकाला है यूएसए से। तो मेरा प्रश्न ये है कि शायद से वो हिंदुस्तान आ रहा है, उसको डिपोर्ट किया जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है केंद्रीय सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन ये सलमान भाई के मामले में, आपके पिताजी के भी मामले में क्या कहना? नहीं, देखिए, वो सलमान भाई के भी मामले में अनमोल बिश्नोई का ही नाम आया है, मेरे पिताजी के हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया। तो अनमोल बिश्नोई को आप लाइए मुंबई और इंटरोगेट कीजिए। और अगर आप यूएसए जो है, अमेरिका बोल रही है कि उसे आज अमेरिका के बाहर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट में, तो हमारी देश की सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और इसे इंडिया लाना चाहिए और तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। Lawrence brother Anmol Bishnoi is in America now. The news of deportation, likely to be deportation from America. What is it? So basically, my family has registered as a victim family in the United States of America. We've contacted all the Justice Department of America and we've been registered as a victim family. So from the victim notification, we get updates about Anmol Bishnoi. Previously also we got to know that he's detained by the DHS, the Department of Homeland Security in Iowa, in the jail of Iowa. And today we've got a mail that federal government has removed Anmol Bishnoi from the United States of America as on 18th November 2025. So the question arises that is he being deported to India? And my strong request to the central government is to actually bring him back if he's removed from America, and for the state government as well to bring him back to Mumbai and to make sure that he's interrogated and arrested because he's a threat to the society. He was named in my father's murder as well. In Salman Bhai's case also, his name has been arising frequently. So he's a threat to the society, to our family, to everyone. And for us to know who's the mastermind behind my father's murder, if they say that Anmol Bishnoi directed it, there must be someone who's asked Anmol Bishnoi to do this. So it's very important for us to know who has asked Anmol Bishnoi to do this. So for that, they need to bring Anmol Bishnoi back to Mumbai. And if he's been released, if he's been removed from America, then it's a very good opportunity for the Indian government to intervene and make sure he's deported back to India. Overall development in your father's case, what do you think? No, see, we are still awaiting justice, and it's been more than a year, and I feel like somewhere down the line, justice has not been served yet. But we are hoping for us to get justice. We are in the court for it, and the people who have done it are behind the jail. But who has actually asked the murder to done? Because nobody is going to do it just for their own sake. Because my father didn't have anything to do with Bishnoi's. So who has asked Anmol Bishnoi or the henchmen to do that? It's very important for us to know that. And we have named the people who we think has done it. But it's for the government and the courts to probe into this. But for today, if Anmol Bishnoi has been removed by the United States of America, he's a key link and he should be brought to Mumbai and interrogated for sure. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.